Well, now little details about Rutherford's experiment. This was actually done with giga mass spin. मतलब ये एक कंटेम्परेरी थे, तो जो एक्सपेरिमेंटेशन हुआ था वो दोनों का नाम पे ही हम लोग लिखते हैं. We know mostly about Rutherford, but actually these people also contributed a lot about the experiment. So उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन में क्या किया था? I just told you कि यहाँ पर एक बोर्ड का फॉयल रख के एक अल्फा पार्टिकल से बोर्ड फॉयल को हिट किया था. लेकिन बोर्ड फॉयल को अल्फा पार्टिकल से हिट करने से पता नहीं चलेगा कि कितना अल्फा पार्टिकल्स आर गोइंग ऑन द अदर साइड एंड हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटरिंग बैक. सो फॉर दैट यू नीड अ फिल्म टू सराउंड इट. एक फिल्म से इसको सराउंड किया गया एंड दैट इज अ व्हाट फिल्म? जिंक सल्फाइड. जिंक सल्फाइड फिल्म. जिंक सल्फाइड जो है ना, इट इज वेरी सेंसिटिव टू चार्ज पार्टिकल्स. तो उससे हम लोग ये चारों ओर से क्यों घेरे उसको? ताकि जिंक सल्फाइड पार्टिकल विल डिटेक्ट whenever alpha particle goes and hits it. So most of the alpha particle went along this direction and a very few alpha particles came back. जो हम लोगों ने देखा, ठीक है? अब when we put the value of number of particles with the angle of scattering, मतलब कितना scattering angle में कितना particles hit किया, we got a graph something like this. This is a graph between number of particles, number of alpha particles, okay, and this is scattering angle. Scattering angle. So it is obvious कि ज़्यादातर alpha particle went straight, right? So मतलब उसका scattering angle जब छोटा है, वहाँ पर number of alpha particles ज़्यादा है, right? When the scattering angle increases, number of alpha particle decreases. Is that clear? That's why we get a graph like this. Now, right. Now we have already discussed about the experimental observation and conclusion, right? Observation and conclusion we discussed first. एक बार हम चले जाते हैं something called distance of closest approach. That is the upper limit of size of nucleus. Ane? What is? Yes. Say if we magnify this situation, ये situation को अगर magnify करते हैं, and say there is a nucleus which is present over here, and an alpha particle is thrown from here. All right? Then both of them are what charges? Positive charges. They should repel each other. तो ये जैसे जैसे नजदीक जाता जाएगा, इसका स्पीड क्या होगा? कम होते जाएगा. कम होते होते एक पॉइंट पे जाके वो रुकेगा, रुक के बाउंस बैक करेगा, राइट? जितना क्लोजेस्ट वो जा पाएगा, we can assume that as the size of the nucleus. न्यूक्लियस का साइज उतना है, उसके हिसाब से हम लोग न्यूक्लियस का साइज मेजर कर सकते हैं. तो वो हम लोग क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच से मेजर करते हैं. रिमेंबर व्हेन वी डिड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पर भी हम लोग क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच किया था. तो बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है और जहाँ पर क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगा वहाँ पर वो पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. So potential energy at that point equal to kinetic energy at the initial point. If we do that, we can find out the what closest distance of approach. So what we do, half mv square is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. मान लो इसको r0 लेते हैं, q1 q2 by r square. Now what is q1? Tell me, q1 क्या है? कौन सा चार्ज? अल्फा पार्टिकल का चार्ज. I told you that is doubly positively charged. So q1 का वैल्यू होगा 2e. E is the charge on what? 1 electron. So r potential. Sorry. Right. Correctly identified. एकदम सही. That was a mistake. ये r square होगा r naught. अच्छा, q1 is the charge of the alpha particle and q2 is the charge of the nucleus. You know z एक नंबर है जिससे हम लोग मास नंबर डिनोट करते हैं या एटॉमिक नंबर डिनोट करते हैं? मास एक नंबर से मास नंबर.
mass number is A and Z is atomic number. ठीक है? Z is atomic number, A is mass number. Do you know what does Z represent? What does that represent? Number of what? Right. Z denotes atomic number, which is the number of protons. Right? Since we are discussing about nucleus, this should be Z into E. You understand why? Because within the nucleus there will be Z number of protons, and each proton has got a charge E. So it will be Z into E. So if we put their values, then half into this mass is mass of alpha particle. Remember, M क्या है, किसका mass है? M is the mass of alpha particle. So what will we get? R का वैल्यू क्या आ जाएगा? Sorry, R naught का वैल्यू आ जाएगा 1 by 4 by epsilon naught 2 into Z into E square. You understand? E into E square by ये half mv square नीचे आ जाएगा इसका. So this is the closest distance of approach. This is the closest distance of approach. Okay? R naught is the distance of closest approach. R naught is the distance of closest approach. Now, why was this essential? Because that gives us an idea what must be the order of the size of nucleus. मतलब radius of हाँ, इसको just वो format में रखने के लिए किया है. You can simplify it further and get some expression. ठीक है? So मतलब actually क्यों ऐसा format में रखा बोले तो क्योंकि most of the sums में ना तुमको M, V ये सब नहीं दिया हुआ होता है. Kinetic energy दिया हुआ होता है. The kinetic energy with which the alpha particle has been thrown. That's why it will be 1 by 4 by epsilon naught 2Z E square by kinetic energy of alpha particles. समझ में आया ना? So kinetic energy दिया हुआ होता है तो directly हम लोग उसका वैल्यू डाल देते हैं और हम लोग को आंसर मिल जाता है. Right? So did you understand what is the utility of this closest distance of approach? क्या मिला इससे हम लोगों को? Now this gives us the size of nucleus. क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ द एटम से उतना डिस्टेंस पे वो रुक गया ना. मतलब न्यूक्लियस का साइज वहां से शुरू कर रहे हैं या उससे थोड़ा छोटा भी हो सकता है. उससे थोड़ा छोटा भी हो सकता है, लेकिन that will be the upper limit. That will be the upper limit of the size. Size of nucleus. Size of nucleus. It is size of nucleus. हाँ जानिए बुझते वाले चाहते हैं खूब बात. तेरा हाँ सब दरकार. सर जो ऑर्बिटल और न्यूक्लियस में जो डिस्टेंस है जो रिलेशन ना वो आगे बात है. अच्छा होएगा चेक सवाल. अच्छा ठीक है बना लो. अच्छा so the next concept is impact parameter. What is impact parameter? See, it is not necessary that all alpha particle made head-on collision. सारा alpha particle head-on collision है ऐसा तो नहीं है. It is only 1 in 8,000. बाकी जो alpha particles है वो न्यूक्लियस के थोड़ा पास से ही निकल गया होगा, right? So if this is the size of the nucleus and this is the central line for head-on collision, and instead of going directly along the central line, मान लो एक alpha particle जो है वो at a certain distance b from the central line गया है, तो जाने से क्या होगा? वो सीधा ऐसे जाके एक पॉइंट में क्या होगा? ड्यू टू रिपल्शन इट विल गेट डिफ्लेक्टेड. क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. सो ये कितना एंगल में डिफ्लेक्ट कर रहा है, द एंगल बाय व्हिच द डिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस, दैट डिपेंड्स अपॉन बी के ऊपर वो डिपेंड करता है. ठीक है? तो कैसे डिपेंड करता है? द इंपैक्ट पैरामीटर, दिस बी इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर. ओके, impact parameter B is equal to Z square cot theta by 2 divided by 4 pi epsilon naught into kinetic energy.
it comes out somewhat like this, ऐसे आता है, ठीक है, on solving. So impact parameter जो है, it is ये सारा तो constant है ना, these are all constants, ठीक है. So therefore impact parameter is directly proportional to cot theta by 2. Now can you tell me cot जो है वो increasing function है या decreasing function? It's a decreasing function. So that means therefore b is proportional to 1 by theta. मतलब थीटा अगर ज्यादा होगा तो b का वैल्यू, क्यों? देखो ये बहुत सिंपल सा चीज है. अगर इम्पैक्ट पैरामीटर छोटा है मतलब क्या, वो न्यूक्लियस का ज्यादा करीब आ रहा है. तो इफ इट कम्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस ए डिफ्लेक्शन एंगल स्मॉल হবে না বড় হবে? अगर ये ज्यादा पास आएगा तो ये ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, तो ये क्या मतलब यहाँ से सीधा निकल जाएगा और भी ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा ना. Are you getting me? So if this b decreases, theta should, that is exactly what we are getting. समझ आया? So impact parameter का मतलब यही एप्लीकेशन है कि if impact parameter increases then theta will decrease. And if impact parameter decreases, theta will increase. ठीक है? So therefore, for bigger values of impact parameter, the deflection will be small. Deflection will be small. Deflection will be small. सर आर का है बिगड़ गई. ठीक है, कुछ बार बड़ा दिया मतलब ऐसा लिखे ही नहीं थे. अच्छा. So अब what are the conclusions? तो इसके हिसाब से the conclusion were according to Rutherford, first conclusion is positive, all positive charges are at nucleus. You know how much small nucleus is? अरे वाह, तो वो कितना छोटा है? Any idea? अच्छा पहले एटम का साइज का एक आइडिया लगाओ. जैसे अर्थ is to an apple is equal to an apple is to an atom. क्या? Earth is to an apple is equal to apple is to an atom. Yes, মানে একটা আর্থের পাশে একটা অ্যাপল কে রাখলে যতটা ছোট লাগবে, একটা অ্যাপলের পাশে একটা অ্যাটম ততটাই ছোট. Comparative, just a comparison. Now that is not all. Now if you come to nucleus, एक एटम में जितना जगह होता है और न्यूक्लियस जितना जगह ऑक्युपाई करता है, it is like the ईडन गार्डन्स, वो तुम्हारा एटम है और जो न्यूक्लियस है इट इज लाइक अ लाइक अ पेन का जो बॉल पेन का जो बॉल होता है दैट इज प्लेस्ड एट द सेंटर पिच. तो इतना ज्यादा स्पेस एम्प्टी रहता है एंड ओनली स्मॉल स्पेस हैज गॉट सो मेनी प्रोटॉन्स टुगेदर. अच्छा, सेकंड कांसेप्ट है की सेकंड कांसेप्ट का হচ্ছে the electrons, all positive charges are at nucleus. Electrons revolve in orbits. ठीक है, लेकिन ये जो है क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? the spectral lines. You know what are spectral lines? The absorption and the emission spectrum. So वो क्या होता है? What are absorption and emission spectrums? अच्छा, এটা আগে হয়ে যাক তারপর বলছি. এটা হয়ে গেছে সবার? See, Rutherford gave us the concept of the atomic structure, but it was not explaining the emission and absorption spectrum. What is emission and what are emission and absorption spectrum? Whenever you supply some energy to an atom in the gaseous state, then the atom absorbs a part of that incident energy. How?
by absorbing the energy, the electrons they go to higher orbits and they rotate at higher orbits. So when you make the energy incident on the other side, you get some particular frequency of energy missing. क्यों? Because वो क्या करता है, एटम absorb कर लेता है, वो एटम absorb कर लेता है, इसलिए वो particular frequency का energy missing हो जाता है. So we call this missing frequency as absorption spectrum. क्या बोला जाता है? हाँ, spectrum क्यों? Because spectrum मतलब बहुत सारे different frequencies of light होता है, उसमें से कुछ frequency missing होता है, and that's why we call it absorption spectrum. After absorption is taking place, if you allow those electrons to come down to lower orbits, they come down to the lower orbits by releasing the energy, and that is called emission spectrum. When those energy are taken on a screen, we get the emission spectrum. ठीक है? So absorption और emission spectrum क्या समझ में आया? लेकिन Rutherford ये explain नहीं कर पाया. Then came Bohr. Bohr ने बताया कि Rutherford ने जो बताया है, almost most of the things are correct, but the electrons which rotate in around the nucleus, they cannot rotate in any specific orbit. They have to rotate in some particular orbits where they don't lose any energy. कोई energy loss? ये ऐसे कैसे हो सकता है? The reason lies in the dual nature concept. Dual nature में हम लोगों ने पढ़ा है कि particle can exist as waves. So what concept is thought of that when the electron is going around the orbit, they don't stay in the state of particle. Instead, they stay in the particle in the state of what? Waves. So if they want to exist in the form of wave, then it should create always a constructive interference over that region. Now remember, for constructive interference, we did this concept that the path difference or path length should be an integral multiple of lambda. Integral multiple of wavelength means if a wave starts from here, it should finally complete a perfect wave. मतलब the number of waves which are writing, number of waves मतलब starting from one point to ending other point. So ये जो number of waves है ये complete होना चाहिए. यहाँ पर incomplete wave नहीं रहेगा. So जो ऑर्बिट में ये complete wave बनाएगा, सिर्फ वही ऑर्बिट में it will stay without losing any form of energy. ठीक है? ये actually Schrodinger's wave equation solve करके निकला हुआ है, but in a very simplified way you can understand it in this way. कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब रोटेट करता है वो वेव फॉर्म बनाता है, और जितना वेव लेंथ रहेगा यहाँ पर that should be an integral multiple. कोई हाफ वेव या फ्रैक्शनल वेव नहीं रह सकता. So according to this concept, what we can say is ये पूरा सर्कल का लेंथ कितना है बताओ? How much is the whole? 2 pi r. This is the circumferential length, right? That should be equal to n lambda. Now, if this is the wavelength of the electron, then you have learned from de Broglie hypothesis, right? You have learned from de Broglie hypothesis that lambda for any particle can be written as h by where h is Planck's constant. अगर वो हम लोग यहाँ डालते हैं, we get 2 pi r is equal to n into h by p. H by p means mv. Now I am making a small transformation. I am bringing the mv on the left hand side and bringing the 2 pi on the other side. So क्या है देखो, mvr equal to nh by 2 pi. So mvr क्या है? Angular, right? So angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. तो बोर ने बोला कि जो ऑर्बिट के लिए the orbit for which mvr becomes exactly equal to nh by 2 pi, in those orbits electron can rotate without losing any energy. So those are called Bohr's orbits. Is that clear? So that justified the structure of atom given by Rutherford to a large extent, but still
Bohr's theory has got a lot of drawbacks, ठीक है। बोर थ्योरी का भी बहुत सारा ड्रॉबैक है और जिसके लिए हम लोग ये ऑर्बिट्स को भी छोटा छोटा पार्ट में ऑर्बिटल्स में तोड़ते हैं, बट दैट एक्सटेंट इज नॉट डिस्कस्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोगों का सिर्फ बोर्स थ्योरी तक है। इसके बाद जो क्वांटम नंबर्स होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब बोर थ्योरी से हम लोगों को दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना, सॉरी तीन चीज। एक है कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का रेडियस, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। ये तीन चीज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ऑलराइट। तो वो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। अच्छा, अब ये सब लोग बना लिया? नहीं। सो दिस वाज द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी, लेकिन बोर्स थ्योरी बताएंगे, पहले ये बना लो उसके बाद बताते हैं। So what does Bohr's theory says? First, it says that first postulate क्या है? An electron in an atom could revolve in certain stable orbits without emission of radiant energy. ठीक है? मतलब electrons can rotate, revolve in some stable orbits without releasing energy. Second, only those orbits are allowed, where MVR is equal to NH by 2 pi। ये कंडीशन होल्ड करता है। ओनली दोस ऑर्बिट्स आर अलाउड जहां पर MVR इक्वल टू NH by 2 pi कंडीशन क्या करता है? होल्ड करता है, ठीक है। थर्ड डील्स विद द emission and absorption spectrum. It says that electrons can transit from one orbit, one stable orbit to the other stable orbit by absorbing or releasing radiation or photon. So releasing a photon whose energy is given by h nu equal to EI minus EF or EF minus EF. H nu equal to EI minus EF, where nu is the frequency of emitted photon. टाइटल लिखा था और कर क्या ट्रांजिट कैन ट्रांजिट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हाँ, ट्रांजिट एक स्टेट से दूसरा स्टेट में, एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जा सकता है। जब वो जाएगा तब वो फोटोन रिलीज करेगा या तो एब्सॉर्ब करेगा, एंड द फोटोन जो रिलीज या एब्सॉर्ब करेगा उसका एनर्जी विल बी इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द टू लेवल्स। मतलब वो जो दो लेवल है, दो एनर्जी लेवल्स है, मतलब ये जो ऑर्बिट्स होता है ना, बोर का ऑर्बिट, इसको हम लोग एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन के पास। सो और वो दो ऑर्बिट में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो फोटोन का एनर्जी भी एग्जैक्टली उतना ही होगा। इज दैट क्लियर? वो ऑर्बिट्स में जितना एनर्जी डिफरेंस होगा वो फोटोन का एनर्जी भी एग्जैक्टली सेम होगा।